are watching Jyotish Shastra, live with Prakash. नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके लिए ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। मैं हाजिर हूं, आपसे बात करूंगा अपने बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में, किसी इशू को लेके चर्चा करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे विचार करना चाहते हैं। बेस होगा आपका बर्थ चार्ट, बेस होगी आपकी जन्म कुंडली। जिस किसी मसले के बारे में, जिस किसी इशू के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, थोड़ी तैयारी करके आए। यू कैन टॉक टू मी इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन टॉक टू मी इन हिंदी और पंजाबी। Choice is yours. And if you like to go for consultation, I need to have your name, full name, date of birth, place of birth, time of birth. These are the details you have to give. This particular details I need from you. Then you have to raise the question. According to your birth chart, I'll present you my astrological opinion. And the base will be your birth chart. You can talk to me in English language, you can talk to me in Hindi, you can talk to me in Punjabi. You're most welcome to participate in the show. And at the same time, I'm going to give you information about these major 4 planets changing in the one. 2 planets are constantly changing, going to change in next week, 17th of March. And the 2 most important planets are changing the transit, the whole equation. And they're changing their moon sign, and they're changing from next month. So Rahu Ketu, north node of the moon, south node of the moon, are going to change from 17th of March. And that change will remain there for next 1.5 years, 18 months. Jupiter is going to change mid-April, and Saturn is going to change end of April. These are the major changes. These changes I'm going to explain to you in English as well as in Hindi. And ये 4 ग्रह आपके चेंज हो रहे हैं, और ये चारों के चारों जो ग्रहों का गोचर है, परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु का तो हो रहा है नेक्स्ट वीक 17th ऑफ मार्च को। बृहस्पति शनि, राहु केतु दोनों ने चेंज करना है 17th मार्च को। बृहस्पति ने और शनि ने अपना गोचर चेंज करना है नेक्स्ट मंथ अप्रैल को। मिड अप्रैल में बृहस्पति ने चेंज करना है गोचर। उसके बाद एंड ऑफ अप्रैल में 28th अप्रैल को सैटर्न ने अपना गोचर परिवर्तन करना है। There are 4 planets, and the impact will be immense. And Saturn's impact will be on our work, profession, career, status, prestige, honor, income resources, our living, our day-to-day, our employment, or job or career, our property, our wealth, our assets, even health issues. Any crisis coming, you're going through this, any crisis situation belong to Saturn. Any trauma happening in the life, directly, indirectly linked with Saturn. Grief, sadness, hard work's reward, service sector, professional people, anything to do with merchandising, anything to do with business, all belong to Saturn. If you're saying how could you define your status in the society, that status will be defined by Saturn. Your status is defined by Saturn. What you are, your status in society, and like what's your worth in society. And a lot of things that depend on that one, your status in society. And Saturn is holding a very important position, very important role in our life. Anybody's earning, living, it doesn't matter whatever you do for your profession, your occupation, you can do anything. But Saturn governs your living. You can be a semi-skilled worker, unskilled professional, unskilled worker, skilled person, professional qualified, business tycoon. Saturn will control your living. Saturn will control your income resources, financial assets, anything to do when you say you have made it regarding converted money into wealth. That is Saturn, living Saturn. So Saturn's transit, when the Saturn transit from one sign to another sign, the whole shift will go. It sometimes goes toward a positive change, sometimes goes toward going through a negative change. So Saturn's transit holding your living, everybody's career, profession, living, income resources, financial backing,
based on Saturn. Directly, our working situation, our career, our employment, based on Saturn. Now going for the call. Hello? Hello. हाँ जी, नमस्कार जी. Namaskar, Prakash. हाँ जी, how can I help you? Well, I'm having a question regarding my friend. His name is Vipul. His name is? Vipul. Vipul. And date of birth? 23rd October 1967. 21st of October? No, 23rd 23rd of October? 1967. 1967. Yes, that's the one. Time of birth? Midnight 1:55. Place of birth? Ahmedabad, Gujarat, India. Okay, and you're calling from? Ahmedabad itself. Okay. So how can I help you? Well, he is having 2-3 questions. Should I start from one? Yeah, please. He want to go abroad. So when he can move? He want to go abroad. Yeah. Okay. I think after 17th of March this year, he can move abroad, but it takes him, the overall procedure can take 18 months. He can move in first 3 months, first 6 months, first 9 months, but from 17th of March, he'll be given 18 months to create a change of place, if you want to. Okay. He is from last 6 months, but nothing is happening. That's all. But from 17th of March, situation can be developed. Yes, some sort of an opportunity will come across, but but moving abroad, fine, great. But the struggle will be quite a lot. May I say that next 3 years are full of struggle. You have to go through that. Going abroad, settling down abroad, finding his position to settle him down, to create his career, profession, base, living, everything. Next 3 years will be pure hard work, day and night, quite a lot. Yeah, after 17th of March, he'll definitely come across an opportunity which can take him to abroad. Okay. But one thing I like to say to him, he must be aware of cheating, deception and fraud as well. Hello? Hello? Hi, but he must be beware of cheating, deception, fraud, because this time period will test his fiber. Next 36 months will test his fiber, no doubt about it. Okay. Definitely I'll tell him to clear up these all things. Any other questions you have for me? Yeah, he's also having very much disturbance in business because he is dealing in electronics repair and everything. So from couple of years, I can say from 2-3 years, he's having so many problems. The business is not going good. No. Like it's a recession time or something like that. So he also worried about that. When can be, the circumstances will change, time will change. Can you repeat the question? I didn't understand anything. Can you speak very clearly, please? He's having problem with his business. He's doing electronics repairing and other things. Yeah. And he want to move. And
the business will be good? Because he is having problem from couple of 2-3 years. I think he's struggling quite a lot. More than 2-3 years. He's going through a lot of struggle, yes. But next 3 years, the running around will be there, but achievement will not be there. But this year, after April, few things will pick up. Last 2 years were very, very tough. But this year, April onwards, something will pick up. Yes. I have to ask you one question. Is he wearing anything around his neck or fingers? Hello? Hello? Hi. Is he wearing anything around his neck or fingers? No, he's not wearing anything. On fingers, he is not having anything, but on his neck, he is having Rudraksh Mala. No. He should take off this Rudraksh Mala. There's a very prominent Jupiter around in the Lagna. He made that Jupiter totally zero. Take off this Rudraksh Mala at once. Never ever touch Rudraksh Mala around his neck again. But if he's have like some sort of a religious faith that he should wearing it, then I'm not interfering in that one. Wearing a bead around his neck, you're going to totally ruin his Jupiter and Venus. They are totally diffused completely. And as longer he's wearing this bead around his neck, nothing will work for him. He have a lot of knowledge, ability, skill set. He have a lot of craft and creativity. But nobody will acknowledge and be very frustrated. And he can contribute quite a lot. But nothing is working out. What he has done, he have a mobile phone top of the range, but he switch it off. So my humble request is, take off this mala around his neck. Don't wear any bead, or any kind of manka, or any kind of a pipe around his neck. No. Yeah, he's having a mobile repair shop and other electronic repair shop. But as you said 100% right, that he's having craft, he's a man of art and all, but he's not getting what he needs to. I'm looking at somebody very qualified, very educated, very creative, very dynamic, full fireball. But he's struggling like he's time trapped him completely. It's just like you have all the resources, but you are totally trapped. You're not going anywhere. And he's very sad, frustrated, annoyed, grumpy. Yeah, this is what's happening with him. Yeah. There's a one particular task I like to have to give him, and he have to do this task continuously. He have to, I don't know how he's going to manage, but he got to do it. It's very important. He should soak 3 kilogram whole moong in the water on Tuesday and feed the birds on Wednesday. Tuesday. He should do it continuously. If he can do it every day for next 180 days, all the clutter will be cleared from the destiny. But if he can't do it today, it's too expensive. 3 kilo whole moong, soak in the bucket of water, and every day morning feed the birds in the roof, at the roof or somewhere where you can find the birds. But this is a discipline you have to carry. If you can't do it every day, then do it soak the 3 kilogram whole moong in the water on Tuesday, feed the birds on Wednesday. That is on principle, you got to do it religiously, without a break. But do it for 180 times, and that will clear the lot of clutter. Otherwise, he have a lot of knowledge, ability, skill set. He can achieve a lot. The sky is a limit. Well, he'll be just crawling on his knees here and there, just desperate for success, desperate for achievement, desperate for accomplishment, desperate for status, prestige. Sometimes he's doing everything
Well, he's just like he's just doing everything, but he's not accomplishing anything. That will give him a lot of frustration. That's lingering on thing. Yeah. Even if you go abroad, going abroad is not a big issue. What you're going to do in abroad? Who will acknowledge you? Who will appreciate you? How you'll be recognized for your skill, art and skill, and knowledgeability and skill set? Who will appreciate you more? Only changing the country will not change everything. You got to change quite a few things. At least if you go abroad, people should appreciate you, people should acknowledge you, people should give you support, help and guidance. People say, okay, I'm standing by you. Yeah. Yeah, definitely I'll ask him to do this task. Yeah. But if he's born, brought up in Ahmedabad and he can't establish himself in Ahmedabad, I'm not saying he can't do anything. He can do. The potential is mega. But the thing what he should do is not making sense. And in his charts, there are 2-3 planets which dismantle him completely. Saturn is one, second one is Mercury. Both have to be thoroughly sorted permanently. And one thing I have to give him, every Tuesday he must donate laddu to Lord Ganesh again and again, again and again. Modak or Ganesh laddu, because you're calling me from Ahmedabad, so I'm sure you can find a Modak in Ahmedabad. Every Tuesday offer laddu or Modak to Lord Ganesh. It's a very important task, very important task. But next 3 years, Definitely will do that. he can move toward the west, but the struggle will be there. Struggle will not be, it's just like you are leaving one place and going to somewhere else, but sometime you'll be somewhere abroad in the west, you feel very trapped, losing all the independence, and achievement will not be that much. But you go anywhere, but make sure he should sort out his destiny. Few locks have to be open. Then he can go abroad. Then he can say, okay, I can make a big change in my life. Otherwise, you have a lot of hassles in Ahmedabad and you're going abroad, you're carrying on the same hassles there. When he arrived there, the call will be waiting for him. Welcome here, mate. I'm here waiting for you. Chapter part 2. I'll start with you with the new issues. So we got to sort it out. As long as he's staying in Ahmedabad, before he move abroad, he should not take that old clutter issues with him to abroad. No. Okay. No problem, sir. Best of luck. Thank you. But this guy have a lot of potential. Tell him. Yeah, he is. Okay. Thank you. Best of luck. प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बेस होगा आपका बर्थ चार्ट. You can talk to me in English language, you can talk to me in Hindi or Punjabi. I'll be more than happy to do my very best for you. आप आए, बात करें, और one thing you have to do, give me your name, date of birth, place of birth, time of birth. वो डिटेल आपको चार तो देनी पड़ेगी. फिर मैं आपका निकालूंगा बर्थ चार्ट. बर्थ चार्ट के मुताबिक मैं आपको ओपिनियन दूंगा, जो भी ओपिनियन होगी. मैं बात कर रहा था कि इस महीने में और this coming month and the next month, 4 planets are going to change the transit, changing the sign, changing the constellations. Yes, 4 planets are going to change, and that will create a mega change. Doesn't matter whatever the birth chart you have, which moon sign you have, which constellation you are born in, but change will happen inevitably, because 4 planets are going to change. But may I say that in next 2 months, all the 9 planets will change. In next 2 months, this month and that next month, all the 9 planets will shift, which is sometimes very rare. Most times 2-3 planets keep on changing. Moon is always changing, no doubt about it. But moon and sun keep on changing constantly. But sometimes other planets sometimes change after 2 months. Mercury is also changed after 3 weeks, 2-3 weeks, yes, done. But
in next 2 months, all the 9 planets are changing. Everybody's astrological equation will change. And you have to find out exactly what this change is going to bring for you. So I'm going to talk about Aries. Aries, this is mega factor, mega time. I'm saying for Aries, at present, Aries, the Saturn is going through 10th house. And Saturn is going to leave the 10th house, no doubt about it. Aries, Saturn is going to leave the 10th house, going toward the 11th house, which is absolutely wonderful for Aries. But movement from 10th house to 11th house is not for a long period of time, it's only for the 10 weeks. Starting from 29th of April 2022, it will carry on till 12th of July 2022. And after 12th of July, Saturn is coming back to the 10th house. Forward, then backward. But next 10 weeks, from 29th of April 2022 till 12th of July 2022, the Saturn's transiting for this particular phase of time. May I say it's for 10 weeks for Aries in 11th house, and is going through Aquarius, transiting through Aquarius. Aquarius for Saturn is one of the finest signs, and is Mool Trikun Rashi, we call it, and is a rising sign for Aries, and Saturn transiting in the 11th house in Aquarius. It's one of the finest position. And the buyer of Saturn will be iron. So Aries, be prepared for unexpected challenges and obstacles. Aries, you'll go through few domestic arguments and conflicts. Aries, you'll go through quite a lot of opposition. But as longer you must exercise common sense, applied wisdom, patience, you will be fine. But one thing very important, Aries, this particular phase of time for you, financially, this time will be a good time for you. You're likely to achieve unexpected profit during this particular period of time, from 29th of April 2022 till 12th of July 2022. Whatever business or profession you are in, this financial boon will bring happiness, many opportunity, and many financial gains. Your Aries, you're likely to acquire significant property during this particular phase of time. You can buy and sell. Undertaking of any kind will succeed and give you desired result. Those in business relating to building material, if your business profession involve construction, if you're a building merchant, if you're a coal dealer, if you're a leather merchant, if you are a business involved gas station, petrol station, and if you are selling stones, precious stones, or marble, granite, those, and if you are selling steel or construction steel, this particular phase of time, Aries, you must look forward for a greater profit. If you're employed, likely to be promoted to a position of higher authority. Aries, if you are a project manager, program manager, this is also auspicious time to pursue your higher studies. You're also likely to be more aggressive in your approach to your activity. Socially, you find contentment. Your respect, status, honor in society is likely to be elevated. Some of you like to be honored with prestige, unique rewards. And this particular time period, Aries, if you're wishing for marriage or companionship, something will happen. If you're a single, you'll experience pleasant companionship. Your friends, your colleagues, your seniors, and the decision makers, especially decision makers, they will be quite helpful towards you. You're likely to meet a lot of new people, a lot of friendship, professional friendship. Aries, your employees and helpers will be positive towards you, and their behavior will be good towards you. Your spouse and family life will bring source of happiness. Aries, in this time period, you'll acquire object that your family will desire, you desire. Health will be fine. But Saturn position in 11th house, the other facets for this transit is, currently your principal task is to integrate your individual self with group expression. Saturn will do that. If you are leading a project, if you are leading a program in a
Saturn will connect you with the team. And people will follow you. And the team will become an integrated part of team. If this Saturn in 11th house will bring out your leadership skill out of your mind, body and soul and present to the people in front of them. Yes, people will accept you as a leader. Saturn position in 10th house is different than Saturn position in 11th house. Saturn position in 10th house, you'll have an opportunity to shine as an individual, but not in 11th house. You can shine not as an individual, you can shine as a group. As a group, you can make a dignified success. With group support, you can accomplish something very dignified. Saturn in 11th house can multiply your success. For Aries, for this particular phase of time, Aries, Saturn is coming to the 11th house, even for 10 weeks. Then after next year's January onwards, again Saturn will coming back to, after 17th of January 2023, Saturn is coming back to Aries in 11th house for more than 2 years. So with a group effort, you can accomplish, you can multiply your success 11 times or 121 times or more than that in 4 figures. But you got to, one thing you have to do when Saturn transit in 11th house, you got to calm down your aggression. Make yourself very polite, very approachable. You got to be very sweet. Then you can accomplish your goal. And Saturn position in 10th house is different. 10th house position is Saturn make you macho, give you a lot of ego and boost your ego. In 11th house, you can't lead with ego, no. If you're expecting a cooperation, support, help, ego have to be lower. If you are leading yourself with a lot of aggression or ego, nothing will work for you. People will not come to you. Saturn's transit in 11th house, you will have a lot of cooperation, a lot of team efforts, and then support will be there. And Saturn transit 11th house will give you responsibility. And sometimes you don't want those responsibilities. But sometimes you accept those responsibilities because bigger the challenge, bigger the accomplishment. Smaller the challenge, smaller the accomplishment. Choice is yours. Saturn position 11th house, bigger the responsibilities, bigger the challenge, bigger will be accomplishment. But may I say that Saturn effect in 10th house is totally different as compared to Saturn's effect in 11th house. Yes. Saturn effect in 11th house, if it's positive, it will convert soil into gold. But again, if it's negative, convert gold into soil. It was the one way, the other way. It will definitely put you in one track. But if you lead your life with discipline, then Saturn position 11th house, सब कुछ बदल देगा, कुछ चीज छोड़ेगा नहीं. और अगर आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं जो सैटर्न के लिए चाहिए. In 11th house, Saturn position and can fulfill most of your, reward you, award you, and your hopes will be fulfilled, your wishes will be accomplished, your objectives, ideas will be done and dusted. And during this particular transit of Saturn in 11th house, you will find out whether you have worked effectively to attain these ideas. Saturn position in 11th house should bring about the result you've been trying to attain in the past. But now the Saturn say, yes, I'll give you the result. If you have prepared as well, then may I say that if not, your expectation will be disappointed. It will be very clear that you're not going to get what you want, but you can make it now. This particular position, Saturn transit in 11th house, you can accomplish it, you can do it. It's all depend on you. But Saturn's position effect in 11th house largely depend on Rahu and Ketu. If these two are positive, they can change the Saturn position from negative to positive. If both of them are negative, then create a negative impact.
And if the Rahu Ketu supports Saturn position in 11th house, then you can achieve wealth and assets. And definitely the whole soil around you will be converted into gold. But Rahu Ketu position for Aries is, if it's negative, then you have an issue, definitely. Your flow of income will be there. But Saturn position for Aries in 11th house, if you want to buy property, do raise the question, is it a right time or not? And I'm going to give you more information about Saturn as well as Jupiter. And from 12th of July 2022 till 17th of January, Saturn is going back again. 17th January 2023, Saturn is going back again in 12th house. It's going back reverse from 11th house to 10th house. And the paya of Saturn at that time will be silver. Aries, you'll come across financial gain, rise in prosperities. Aries, Saturn position in 10th house for Aries. This particular phase of time, opportunities will be there. Accomplishments will be there. During this particular phase of time, you'll be involved in a lot of new project, new venture, new idea, new concepts. Aries, Saturn position for 10th house for you at that time, between 12th of July till 17th of January 2023, you will be in contact with a lot of professional people, powerful people, decision makers, investors. Your foreign journey and project will be successful. Aries at that time, between 12th of July 2022 till 17th of January 2023, you will be involved in a lot of social events, mingling with people, and business networking will be developed. With your own ability, knowledge and skill set, Aries, you will be able to achieve all kind of comfort, luxuries, lifestyle. But you must look after your marriage, relationship. You must look after during that time your business relationship. There will be few issues regarding the communication. Can be. As long as you're communicating with your life partner and the business partner properly, you'll be fine. But sometimes people go in a tangent mode. Sometimes they don't want to communicate the way they should. And if you are not communicating properly, if you're not investing passion, love, care, affection in your personal relationship as well as professional relationship, if you adopt a very cold attitude toward your life partner or business partner, then the situation can deteriorate. So you have to be extra careful. And at the same time, look after your family's health and well-being. Try not to be big-headed. There are few Aries, when the Saturn coming back to the 10th house, you'll come across few professional challenges. But in the end, with your determined efforts, you will be highly successful. If your profession, Aries, involve politics, if your profession involve Aries, information technology, engineering, medicine, if you're a professional consultant, if you're a steel merchant, building merchant, if you're a property developer, if you are a petrol, gases, diesel gas station owner, if you're an oil dealer, if you are a mineral dealer, steel dealer, if you're a wholesale merchant of steel or minerals or metals, and if you're a tool maker, if you're a wholesale food supplier, if you have furniture warehouse, if you're an architect, if you're a consultant, Aries, that particular time, your achievements will be dignified and your achievements will be more in abroad than in your motherland. And you will build some sort of a property and assets as well, and status will be elevated. But this particular phase of time only possible with hard work, focus, consultation, determination, and strict code of conduct when it comes to discipline. Saturn in 10th house give you rewards, but expect quite a lot from you. You got to contribute quite a lot regarding hard work. Saturn in 10th house can create, as a side effect, is a lot of stress. Side effect, you'll face a lot of challenges in personal life and professional life, both. If you're a trader, Aries, and businessman, then be prepared for some sort of a
huge expenditure or losses. If you're a manufacturer, watch your investment. And if Aries, some of you are likely to consider sometime change of occupation, change of profession, change of field of your work. If you find a new job, you find it difficult to carry out because due to a lot of political situations. Sometimes mutual feeling of aversion may crop up between you and your employer. Sometimes communication can go out of the window. There's no communication. A time to be aware of hidden enemies. Aries, your expenditures are likely to be higher than your income. And you should avoid taking out loans. Health needs proper attention. Take care of your knees and just at this time. Your parents might fall sick with some sort of a issue, health issues. Take care of them. At home, you may develop some sort of a mental friction or lack of communication or no communication can happen between you and your spouse. Travel can be on the cards, and some of you have an urge to do a lot of things, but maintain your respect and honor in society. Saturn in 10th house. Saturn in 10th house, may I say that you got to prepare yourself very thoroughly when Saturn transit in 10th house. If you are well prepared, if you are disciplined, if you are driven, if you are dedicated, the result will be excellent. Saturn in 10th house want to expand your profession. It's just like you own the house and suddenly a builder came along and he said, no, we have to refurbish the whole property from top to bottom, from roof to the floor, everything. Saturn position in 10th house is like that. Saturn want to expand the profession. Saturn want you to invest some money, spend some money. And sometimes we are very comfortable the way we are living. Saturn say, no, I need to create a major change in your profession. In your professional life, you will gain some responsibility, but every responsibility comes with duties and opportunities. If you're Aries, if you're a leader, or if you have ambitions for leadership, Saturn position in 10th house can offer you great achievement. If you have if you have ambition to be a leader, you want to lead a business organization, or you want to lead the whole community, if you have some sort of that kind of a hidden ambition, and you want to say, I want to lead a professional organization, I want to run an organization, and I like to achieve a lot. So Saturn in 10th house can fulfill that. And sometimes people do have that kind of a element in their head, they want to lead. They want to be a leader. Leader of the family, leader of the business. Yes, they want to lead a political party. They want to organize some sort of organization and lead it. But leadership will always give you responsibility. But bigger the responsibility, bigger the challenge, bigger will be the achievement. But Saturn in 10th house can fulfill that particular ambition of yours. But Saturn in 10th house, if you do it, if you deal with it properly, Saturn position in 10th house can be very productive. And it will develop you in every sense. It will build you a lot of network. Saturn position in 10th house, it represents your individuality as well, no doubt about it, but also give you unique accomplishment. But demand a lot of discipline, a lot of drive, a lot of determination. Yes, it will give you opportunity with components of issues. You've got to accept the opportunity as well as the complications. You've got to deal with it. But Saturn position in 10th house can give you kind of a limelight. It will, through that, you can make impression upon the world as an individual, what you are capable of, what your qualities are. But Saturn position in 10th house, this time can also be a time of disaster. Yes, if you don't handle it properly, if the discipline is not there, negative energy that you have unleashed in the past
may have a negative consequences now. You got to be very careful. Saturn position in 10th house. May I say that in the past, may I say that if you don't deal with properly, then it will bring a lot of negative qualities. And may I say, you can't afford any shortcuts. You cannot start a scandal or any kind of a scandal. You have to be very, very disciplined, whatever you want to do. And whatever the action you take, you have to justify all those actions. You can't say, I want to do this and I want to do that without thinking. No, you can't do that. Saturn in 10th house will only award you if you are very driven, very much dedicated, very much creative, active, disciplined. Saturn will reward you, no doubt about it. But the only thing is you got to be extremely cautious and very, very careful. Saturn will definitely award you. Hello? हाँ जी प्रकाश साहब नमस्कार, कैसे हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ जी. हाँ जी प्रकाश साहब, ये मैं अपने बारे में पूछ रहा था. हाँ जी बोलिए. और राहु का 10th of March 76. सबसे पहले अपना नाम बताइए. शाहिद. डेट ऑफ बर्थ. 10th of March 76. टाइम ऑफ बर्थ. 5:30 evening. 5:30 in the evening. जी जी. प्लेस ऑफ बर्थ. लाहौर. हेलो. हाय. हेल्थ के बारे में पूछना था प्रकाश भाई. हाँ जी, हेल्थ के बारे में सवाल दीजिए, मैं जवाब दूंगा आपको. मैंने कहा ये हेल्थ के बारे में पूछना था. कुछ ये तकरीबन 1 साल हो गया, काफी ना लेजी हो गया हूँ. और पता नहीं जब से कोरोना के इंजेक्शन लगे हैं तब से तो शाम को जो है ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, काफी लेजीनेस है, उस तरह एक्टिव नहीं रहा. एक तो जी अपनी आई साइट का बहुत ध्यान रखिएगा. किसका? आई साइट का. अच्छा. और एक अपनी बैक का बहुत ध्यान रखें. और बैक की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती. और आई साइट और बैक दोनों का ध्यान, आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा और बैक का बहुत ध्यान रखें. और जब भी आपको मौका मिले अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं. अच्छा. और डॉक्टर साहब से प्रॉपर सलाह लें और अपना वेट अपना वेट वगैरह चेक कर किया करें. ओवरवेट ना हो इस समय. अच्छा. हाँ जी. तो दूसरा राहु की क्या पोजीशन है मेरे कुंडली? राहु की पोजीशन इस समय ये है कि इस समय किसी भी लीगल अथॉरिटी से बच के रहे. अच्छा. लीगली आप कोई रिस्क ना लीजिएगा. अच्छा ठीक है. ये ना हो कि आप लीगली को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करें, वो ना कीजिएगा. ठीक है. उसमें आप कोई इलीगल कोई काम ना करें जिसको इस समय आप कोई लीगल रिस्क नहीं ले सकते. अच्छा ठीक है. ठीक है, वो मैं करता ही नहीं. हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा. अच्छा. तो ओवरऑल बाकी बिजनेस का तो आपने उस दिन बता दिया था मुझे. बिजनेस पे आपकी कई चीज़ें आपकी इस समय आनी है. जो एक जो आप पिछले काफ़ी सारे ट्रैप से फंसे हुए थे पिछले 2 साल से, उम्मीद करता हूँ इसमें इस समय आपको 10 हफ्ते की ब्रेक मिलनी है. उसके लिए तैयार हो जाए. ठीक है. ठीक है. और फिर आगे जाके जनवरी अगले साल में आपने कई सारी
मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ जाना है। जो पिछला आपका 2-2.5 साल का स्ट्रगल था उससे तो बाहर आ जाएंगे। हाँ पिछले 2-2.5 साल काफी आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें से वो चीजें आपकी, उसमें से कई चीजें आपकी, आप बाहर आ जाएंगे। जी 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 जी। लेकिन वाइफ की हेल्थ की वजह से भी काफी परेशान हूँ। उनकी डिटेल देके फिर उनसे उनके थ्रू बात करें। लेकिन अपना थोड़े जो कोई मतलब लीगली अपने आप को करेक्ट रखें। ठीक है ठीक है। जो आपका लीगल जो आपका स्टैंड है उस पर बड़ा ध्यान दें। ठीक है। उस पर कोई ऐसी चीज ना हो कि आप उसमें कोई आपके ऊपर को ब्लेम आ जाए, वो वहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन इस साल ये है कि अगर वो आप लीगली कह रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा है नहीं एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, फिर आप ठीक है। फिर आपकी ये है कि इस अप्रैल में बहुत सारे बदलाव आने हैं और उनसे चीजें आपकी चीजों में बेहतरी आती जाएगी। अच्छा 10 अप्रैल के बाद? 10 अप्रैल के बाद नहीं, अबाउट 13 अप्रैल के बाद चीजों में बेहतरी आएगी। हाँ। और एंड ऑफ अप्रैल के बाद भी बेहतरी आ जाएगी काफी। अच्छा अच्छा अच्छा। इस समय जो आपके पिछले 2 साल में या 1.5 साल में काफी जो कर्जे आ गए हैं या पैसे का खर्च हो गया है या आमदन नहीं है, उस पे 17 मार्च के बाद इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं आपको ये ओपन बात कहना चाहूंगा, इस समय जो टाइम आ रहा है उसमें आपको कोई 2 नंबर के काम की प्रपोजल बड़ी मिलेगी, ये कर लो वो कर लो, वो ना कीजिएगा। वो तो रोजाना ही मिलती है, आप नहीं करते। हाँ नहीं, वो इस समय आपकी वो जो प्रपोजल आपकी पहले से 5 गुना और आ जाएगी। अच्छा। और कई बार इंसान परेशान होता है, उसको लगता है यार काम कुम तो चल नहीं रहा, चलो यही करके देख लेते हैं, तो वो उस पे ना जाना प्लीज, क्योंकि उसमें आपके कानूनी शिकंजे का आपके ऊपर आ जाएगा। फिर वहां पे वो फड्डा आपका सीधी गवर्नमेंट के साथ हो जाना, वो ना कीजिएगा। ठीक। हाँ, वो उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, वो आपका 1.5 साल रहेगा 17 मार्च के बाद, कि ये कर लो वो कर लो और अच्छा ये करके देख लो, वो ना कीजिएगा। और वो होगा डायरेक्टली मनी से रिलेटेड। हाँ ये सही बात। हाँ, और किसी की जिम्मेवारी ना लीजिएगा। कोई आके कहे यार मेरी इनसे कहो कि आप गारंटी लेते हो मेरी, नो 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 नथिंग। आप इसमें सीधा आने के लिए, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं किसी की गारंटी क्या लूंगा, मैं तो अपनी नहीं ले सकता, आपकी क्या लूँ, छोड़े आप। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप, छोड़ दिए। आपको वहां पे बात को निपटाना होगा। और ये पक्की बात है, किसी ने आपको फंसा देना अगर आप अलर्ट ना हुए तो। बाकी ठीक है, थोड़ा अलर्ट होके चले। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छी। जो आपका चक्का जाम है वो निकल आएगा एंड ऑफ अप्रैल में। वो जो आप फंसे हुए हैं ना, लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, बहुत हाई तौबा बची हुई है, उस पर तो आप निकल आएंगे। लेकिन ये जो आपकी चीजें आपकी तरफ आएंगी, अपॉर्चुनिटी भी होगी और फ्रॉड भी होगा, दोनों साथ आनी है। हाँ हाँ, लेकिन ये ना हो कि आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें और फ्रॉड के बैठ जाएं, वो ना करें। वो पैसों से रिलेटेड होगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं बात कर रहा था एरीज के बारे में। एरीज के लिए जो सैटर्न की पोजीशन है, बहुत प्रोमिनेंट उसकी पोजीशन है, बहुत बड़ा बदलाव आना है। और जो एरीज के लिए जो मैं जो बात कर रहा था, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एरीज के लिए पोजीशन सैटर्न की तो है ही है। एरीज के लिए जो मेरा ये मानना है कि राहु केतु की पोजीशन बहुत एक्यूट है, इज अनबिलीवेबली एक्यूट एरीज के लिए। मैं बात करूंगा बृहस्पति की। बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो हम जिसके ऊपर हमें बड़ी उम्मीद होती है और बहुत हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारी इंसानों की डेवलपमेंट का मालिक है। बृहस्पति के बिना हम डेवलपमेंट नहीं देख सकते। अगर हमें डेवलप होना है अपनी ज़िंदगी में, मान लीजिए हमें नॉलेज अचीव करनी है, तो बृहस्पति के बिना पॉसिबल ही नहीं है।
और फिर हम कहेंगे भाई अब क्वालिफाइड तो हो ही गए हैं, अच्छा हमें को रेगुनाइज करें, वो भी जुपिटर के बिना नहीं हो पाएगा। जुपिटर की तब भी हमें सपोर्ट चाहिए कि भाई अच्छा मैं नॉलेज एक्वायर कर ली है, अच्छा इस नॉलेज को घास भी को डाल दे। तो वो जो बात है वो बृहस्पति के बिना नहीं हो पाएगा। अच्छा उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा हम काम कुम तो मिल गया है, अब शादी का को बंदोबस्त करें, मेल है फीमेल है बोथ, तो वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना कभी नहीं हो पाएगा। आपके इश्क चलते रहेंगे लेकिन कमिटमेंट कोई नहीं है। कमिटमेंट में कोई, उसमें कोई, आप किसी के साथ भी घूम फिर सकते हैं और बाहर अंदर जा सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट कोई नहीं है। कोई कमिटमेंट थोड़ी है, कभी दिल आया तो मिल लिया, नहीं है तो नहीं, सी नहीं मूड है नहीं बात करेंगे, करेंगे तो करेंगे, कमिटमेंट कोई नहीं। जुपिटर कमिटमेंट आपको देगा, फिर आप कहेंगे कि अच्छा भाई अब शादी हो गई है, अब घर, पहले तो जॉब हो गई है, अब शादी भी होगी। ये जो सारे काम है ना, आपको जो जॉब का काम है बृहस्पति ने शनि के साथ मिलके करना है, अकेले वो भी नहीं करेगा पर करेगा जरूर। और जुपिटर सैटर्न के साथ मिलके कॉम्बिनेशन बना लेता है। लेकिन उसके बाद जो शादी होती है, जुपिटर का बहुत बड़ा उसमें दखल है, मेल हो फीमेल हो। जुपिटर शादी बिना उसकी समाज से, धर्म से, कानून से, हम उसको लीगली कर ही नहीं सकते बिना जुपिटर के सपोर्ट के बिना, करवाएगा वो। उसके बाद बृहस्पति ने, हमें शादी हो गई है, अब द रिवार्ड ऑफ द मैरिज इज बच्चे, फैमिली, वो भी जुपिटर आपको बनाएगा, वो भी जुपिटर ने आपकी मदद करनी है। बिना जुपिटर की सपोर्ट के बिना आप मेल हैं फीमेल हैं, बच्चे का कोई सोच ही नहीं सकते। आप शादीशुदा हैं लेकिन फैमिली बनेगी बृहस्पति के सपोर्ट के साथ, बिना उसकी सपोर्ट के साथ कभी नहीं बन सकते। तो ये जो 3 काम है हमारी ज़िंदगी में, हमें प्रोफेशनल क्वालिफाइड बना देना, हमारी शादी का हो जाना, हमारी फैमिली का बनना, बच्चे बुच्चे पैदा हो जाना, ये तीनों काम जुपिटर ने करने हैं, इसकी सपोर्ट के बिना हो नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल सेट है, हम कोई कुछ जानते हैं और उसको दुनिया के साथ सामने जाहिर करें और दुनिया मान ले हमें कि हाँ हमारे पास कोई नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना ना हो पाएगा। जुपिटर की सपोर्ट हमें मिलेगी तभी वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। और एरीज के लिए बृहस्पति 12वें घर में जा रहा है 13 अप्रैल को, और वहां जाके इसने 1 साल रहना है, यानी मोर देन 1 ईयर एंड 10 डेज रहेगा। 13 अप्रैल को एरीज के लिए बृहस्पति ने 2022 में 12वें घर में चले जाना है और वहां रहेगा 22 अप्रैल 2023 तक। ये एरीज के लिए बृहस्पति 12वें घर में है। बृहस्पति का 12वें घर में आना, खर्च आपका बढ़ जाएगा और कई बार वो खर्च आपका अच्छी चीज़ों पे होगा, लोगों की मदद के लिए भी हो सकता है, दान पुण्य के लिए भी हो सकता है। बृहस्पति 12वें घर में है। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे आप पैसा बहुत खर्च करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों पे पैसा खर्च होगा, फजूल चीज़ों पे नहीं होने वाला। और बृहस्पति 12वें घर में है। इस टाइम के अंदर आप अपनी जो आपके पास पोजीशन है अपने काम में, उसको उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी और इस समय कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना ले जब बृहस्पति 12वें घर में है। और सम टाइम थोड़ी बहुत बिहेवियर में चेंजेस नजर आएंगे एरीज आपकी, और कई बार आपका अंडर स्ट्रेस, जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो हम थोड़े बदल भी जाते हैं, हमारे बिहेवियर एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है। तो स्ट्रेस इज ए वेरी बिग फोर्स। बृहस्पति 12वें घर में होगा, अंडर स्ट्रेस हम अपने बिहेवियर को बदल देंगे और कई बार हम नेगेटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करके बैठ जाएंगे और हमारी अप्रोच भी ठीक नहीं होगी अपने नीरेस के साथ, और कई बार वो चीज़ें आपकी अगेंस्ट भी जा सकती हैं। रेपुटेशन का ध्यान रखें। इस समय आप बृहस्पति जब 12वें घर में है, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में ना फंस जाएं। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, बृहस्पति 12वें घर में है, इस समय आप पैसे कमाने चाहेंगे, पैसे बनाने चाहेंगे, और ये भी है बृहस्पति 12वें घर में है। इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि बृहस्पति 12वें घर में
कई बार इसके रिजल्ट वैसे नहीं होते जिस तरह बाकी ग्रहों में होते। जुपिटर हर घर के ट्रांजिट क्रिएशन नहीं करता। किसी घर में ये घर को हील करेगा, आपको हील करेगा, कई बार किसी घर को कंस्ट्रक्ट करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा। हर जगह ये डेवलप नहीं करेगा। हम चाहते तो यही है कि बृहस्पति 12वें घर में हमें बाकी घरों की तरह डेवलप करे। कई बार ये उस तरह से डेवलप नहीं करता, लेकिन यहाँ ये आपको कुछ सिखाना चाहता है दुनिया के बारे में, धर्म के बारे में, लोगों के बारे में, इंसानियत के बारे में। बहुत सारी चीज़ें जो पिछले घरों में उसने नहीं सिखाई, यहाँ सिखाना चाहता है। बृहस्पति 12वें घर में हो, बृहस्पति 6ठे भाव में हो, इन दोनों के घरों के इसका जो रंग है, रिजल्ट है, वो काफ़ी अलग है। वो वैसा नहीं है जिस तरह बृहस्पति लगन में होता है या दूसरे घर में होता है या तीसरे घर में होता है, वैसा नहीं हो। नो, बृहस्पति 12वें घर में हमें बहुत बार हमें दीन दुनिया के बारे में सिखाएगा, हमारे धर्म के बारे में सिखाएगा, और अगर हमारा मुकद्दर अच्छा है तो हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ स्पिरिचुअल डायमेंशन भी शुरू करेगा जो पहले हमारी थी नहीं। कई बार हम बहुत ज़्यादा, जो 90% लोग हैं वो फिजिकलिटी ज़्यादा होती है, स्पिरिचुअली हम उस पर कई बार जाते नहीं। 10% लोग होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल डायमेंशन की शुरुआत करने को दिल करता है और वो कर भी लेते हैं। 90% में उस पर ध्यान ही नहीं होता। आत्मा के बारे में कौन सोचे? अब तो घर के बिल देने हैं, मोर्गेज पे करनी है, गाड़ी के पैसे देने हैं, इसके ये करना है, उसका वो करना है, घर में ये हो गया, वो हो गया, आपकी यही 50,000 चीज़ें होंगी। आत्मा के बारे में, उसकी आत्मा का शोषण ना हो जाए, आत्मा का विनाश ना हो जाए, आत्मा की उत्पत्ति हो, उस राइज करे, और हमारे पूरा हम जो आत्मिक उन्नति करें, उसके बारे में सोच 90% लोगों की तो नहीं होगी, 10% की हमेशा होती है। बृहस्पति 12वें घर में, इस समय जब बृहस्पति 12वें घर में आएगा, ये आपको उसके बारे में विचार करना शुरू करेगा कि भाई थोड़ा उसके बारे में सोच ले, थोड़ा स्पिरिचुअली भी डेवलप कर ले, थोड़ा स्पिरिचुअल एजुकेशन ले ले, थोड़ा स्पिरिचुअल डिमेंशन कुछ खोलें अपने को। अब ये भी है कि यहाँ पे ये नहीं कि कोई फियर है, नो, यहाँ पे आपकी वो डिमेंशन इसने खोलनी है। और बृहस्पति 12वें भाव में यहाँ पे उसने आपकी कई चीज़ों, आपके बिहेवियर को बदलना चाहता है, सोच को बदलना चाहता है। आपकी सोच पहले कुछ भी थी, अब वो सोच के अंदर पैशन चाहता है, एम्पैथी चाहता है, दूसरों के लिए हमदर्दी चाहता है। अब वो चाहेगा कि आप दूसरों की मदद करें, और अब बृहस्पति 12वें भाव में है, आप उसके लिए, जैसे आप कोई भी हो, इस समय आप वो करना चाहेंगे जो पहले आपने कभी सोचा नहीं था, और इस समय आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है। अच्छा, इस समय जो आप गाइडेंस चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। बृहस्पति 12वें घर में हमेशा आपके लिए कोई ना कोई गाइड, मेंटर, टीचर, गुरु लेके आएगा। बृहस्पति 12वें घर में है एरीज के लिए अपने गोचर के दौरान, ये मैं ओपनली कहना चाहूँगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू वेरी ओपनली, व्हेन द जुपिटर ट्रांजिट इन 12th house, you always come across a spiritual teacher, but that doesn't mean that spiritual teacher have particular uniform code conduct. No, 99% that spiritual teacher can be your family member or family friend or your colleague, or you know somebody, knew somebody in the past. God have to speak to you through person. It doesn't matter whoever this person is. That person is not like a given any status. That person you can just, when you're traveling, you're sitting next to each other and somebody's talking to you. God can talk to you through that person as well and give you an idea. Sometimes we are clogged up with our own thoughts, but that person can, within a minute talking, open your mind dimension thoroughly. But that person is not, is like you adopted that person as a guru. No, you are given an idea. Yes, that is happen. That can happen. Okay, Swar and Ishwar, very small distance, very small difference. Swar and Ishwar, very small, very, very small difference. And when you speak, God can speak through you, to anybody, through you, yes. But here, you'll find a teacher. And the teacher doesn't have a specific code, conduct, or any ceremony, no. God can speak to you
to you through anybody if you choose to. But remember that that person will come through any form. He or she will not be recognized as a particular status or teacher. No. An old friend suddenly assume this role. An old colleague can assume this role. You're traveling and somebody you're sitting next to, that person will be given that job to talk to you about something. Because Jupiter in 12th house is going to heal you. What you need healing from the last 12 years. The cycle is completing. End of the 12th year. 11th, after 11th year. So here the Jupiter is going to heal you. What you done from the last 11 years, what you learned from the last 11 years, what you have committed in the last 11 years. Now the Jupiter want to heal you. Want to show you some sort of a mirror as well. And here you will be acknowledged, oh, I think I haven't fulfilled that. I think I need to do that. Here, this particular time period, somebody will come along and offer you kind of a guidance or help. So please accept it. And this particular person, whoever will come along when the Jupiter transiting in 12th house for Aries, you will be opening, you'll be giving a gentle nudge, push toward a spiritual path. Yes. Or ignite your spiritual wisdom. You haven't thought in the past, but now you are thinking about your soul and the spiritual progression. Jupiter in 12th house opens the hidden aspect of your existence. You like to seek some knowledge, and you will be given a support and comfort, some kind of a meaning, some kind of an education, a new learning. And that learning will create an improvement. And your involvement will be there. It doesn't matter if your involvement with the Orthodox religion or organized religion or some kind of a organized some sort of a movement or literature. Yes, but you will be given some kind of that kind of learning, yes. But Jupiter in, may I say, 12th house for Aries, but you got to look at your yearly forecast. If that time 5th, 7th, 9th house is occupied by Venus or Mercury or Rahu, if you're going through too much restlessness and going through a lot of uncertainties or going through huge expenditure or living conflict, then you got to raise the Jupiter. Yes, the one easiest task is keep ponytail, back of your heads here, make them keep that ponytail of your hair. And if you can, the cheapest task is do wear a white color or beige color cap on your head. If you can do that. And Jupiter's effect will be good. But for Aries, I'm going to talk about Rahu Ketu. Rahu Ketu is a very mysterious planet. Rahu Ketu is just like they give you the effect of what you committed in previous life or this life. They can give you the impact or effect of what you have done in the previous lives as well as what you have committed in this life. Rahu Ketu's effect will come through from that particular pot, where the pot of your karma. If you committed a good karma, make your life better. If you committed a pap karma, then the Rahu Ketu will both punish you. They are organized by the Lord himself. So that is their duty, well-defined duty. Rahu Ketus represent that they are like an accountant of time. You say, okay, you've done this in the previous life. Now this year I'm coming to this house, so I will make your life this way. Yes, then the effect will be there. If you achieve a lot of punya, बहुत positive कर्म किया, तो in this life, when the Rahu Ketu changes now, they'll give you achievements, rewards, success, power, authority, name, fame, establishment. Rahu Ketu can do that. Yes, Rahu Ketu's ability is immense. They won't waste time. They're very, very fast.
more speed than any other planet. Yes. But when the Rahu Ketu's effect become negative, if you committed a lot of pap karma in your life, then you'll go through a series of failures. Too much grief, agony, setbacks, major obstacles, delays, uncomfortable life, living argument and conflict, body pain, tension, depression, instability, too much confusion, too many illusions, a lack of understanding, paranoia, living conflict, and bankruptcy. So Rahu Ketu's positive and negative effects is like this. So may I say that transit of Rahu for Aries in first house is already going to start his transit from Aries, from the Lagna of Aries. Lagna will be Aries. Rahu is already coming towards Aries, starting from 17th of March and will carry on till 29th November 2023. This year, 17th of March 2022, the Rahu will be transiting in Aries till 29th November 2023. Rahu transiting your own sign. And Rahu gives you a lot of indulgence in materialistic affairs. Rahu will give you confidence dealing with many situations. Those are tedious, complex, challenging. But Rahu will not only give you confidence, Rahu can give you super confidence. Yeah. Rahu's confidence is uncomparable. And that is a super duper confidence. Rahu is not going to give you confidence like a Jupiter. No. Rahu will give you confidence like a madman's confidence. Yes. Totally. Maniac confidence. Proper. And arrogance beyond imagination. Yes. Me. I. You're only talking like this. Me. That's Rahu. Ego will be maximum inflated. You can't even imagine. The ego is because an aggression can be paramount. Stubborn attitude will be all the time. So that is Rahu in the Lagna. And sometimes you won't acknowledge anything if you don't want to. Rahu gives you too much ego, super duper confidence, and that kind of confidence become a part of your ego. And you only wanted to listen to somebody who can massage your ego. If somebody is talking against you, you said, no, this person is my enemy. How dare you speak to me like this? It's too much ego. And that is Rahu. And too much arrogance. You don't want to know anything. No. Too much arrogance. You don't want to hate anybody. And Rahu's transit in Lagna in Aries, you end up wasting a lot of money. You're not calculating any risk. And there will be a lot of unexpected expenditure. Aries, Rahu's transit in Aries, you have to be extra careful to avoid trouble from enemies. But sometimes you're not. Sometimes you say, yeah, I don't care. They are nothing. And you will simply ignoring people around you. Rahu will build your overconfidence so much, your ego so much. You will leave the humility at once, and then you only awake when you will be thoroughly humiliated by people around you, when you're trapped by people around you, and a lot of problems crop up in your field of activity, and you have to be extremely cautious. May I say very careful of any ill-willed people, dodgy people around you, and avoid activities which are not normal. Health require a constant attention. Either you're going through a lot of migraine, a lot of blood pressure issues, or migraine issues, or sharp pain in your body,
any part of the body. And sometimes you need some sort of a healing or help. The health of the parents also require attention. The Rahu transit in your Lagna. And Rahu in the Lagna, you'll be worried constantly. And you're going through a lot of misery. And sometimes you become nervous. Sometimes mentally you'll be troubled and very much restless. Rahu in the Lagna in the Aries, a Rahu transit in Aries, Rahu will give you authority, but major challenges, major complication. There will be lots of professional fluctuations, financial fluctuations, but there will be a constant change. Rahu transit in Lagna, you go through series of rising and falls. You go through major obstacles, delays and waste of time. You go through major complications. You got to watch your actions, reactions and word of speech. You have to be extra careful. So these are the effect of Rahu's transit in your Lagna. But the one very basic task you must do, you can all do, all of us can do that. Do respect your mother and do take her blessings. That will help you, Rahu. Yes. And refrain from any kind of arrogance or stubborn attitude or irrational behavior or any illegal, scandalous actions. The Rahu is transit in the Lagna. Ketu will be exactly opposite, 180 degree opposite. So Ketu at the same time transiting your 7th house. Rahu is in the Lagna in Aries. Ketu will be in 7th house, Libra. Aries, Ketu's transit in 7th house. In the 7th house, it brings some personal suffering for you. Especially if you are a married person. Especially if you are romantically involved with somebody. Ketu in 7th house transit, it can also dominate your health. Some sort of a health issues linked with lower abdomen, bladder or stomach. And Ketu in 10th, in the 7th house, mentally you feel not very healthy. You feel agonized. And you have to watch your expenses. You can end up spending a lot of money, more than you can even need. And Ketu's transit in 7th house, please avoid borrowing at any cost. And if you are a manufacturer, be careful with your, look after your business. Beware of cheating, theft, or fraud in your business. And Ketu transit in 7th house. This time period, may I say, you'll be suddenly encountering a lot of progression, and at the same time, finances can fluctuate, and progress, opportunities will be there for progression, but you have to maintain proper code of conduct. That's very important. If you can maintain proper code of conduct, then you can progress. If you can't, then you end up having a lot of arguments with a lot of people. Ketu transit in 7th house. Your personal relationship becomes sour due to lack of understanding, due to lack of support. Your personal relationship can be full of sourness. At this particular time period, with the Ketu transit in 7th house, any fight with your spouse can make your partner leave you during this phase of time. Being Ketu transit in 7th house. Establishing a coordination with your relatives will be good. But here, Ketu transit in 7th house, it will create so many misunderstandings between you and the relatives. And you end up having a lot of animosity between each other. Avoid all kind of disputes, litigation during this phase of time. You would also need to hold on to your reputation. It could be hampered. You may be defamed in the society if you're not careful. Ketu transit in 7th house. And
It's defected your Venus, your love life, your romantic relationship, both will suffer. You got to watch your bitterness, you got to watch your word of speech, you got to watch your behavior, you have to watch your action or reaction. Refrain from any kind of lies and scandals and attitude. Please refrain from ego, false pride. Your own behavior, your own word of speech can create a lot of issues, can create a lot of hassles, can create a lot of animosity. You have to be careful. Ketu transit in 7th house is very tricky. And may I say that the one thing you must do, try to keep a black colored dog or look after a dog or provide a dog feed to dog home. That's the best solution you can do for yourself. And I'm going to talk about Taurus. Taurus, again 4 transit. The 4 transit which is coming, which is changing. 4 planets are changing the transit in next 2 months. And Rahu Ketu, Dragon's Head, Dragon's Tail are changing transit in this particular 17th of March. Saturn change end of the April. Jupiter going to change 13th of April. And if you want to participate in the live show, pick a phone, call me. And I need to have your name, date of birth, place of birth, time of birth. मुझे आपका नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए. जो मेरी ओपिनियन होगी वो आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक होगी. टॉरस के लिए बात करेंगे. टॉरस के लिए गोचर क्या लेकर आएगा? टॉरस के लिए राहु केतु का गोचर, टॉरस के लिए बृहस्पति शनि क्या लेकर आएगा? और अभी जो टाइम चल रहा है, राहु केतु के बारे में बात मैं करूंगा. ये जो 4 ग्रहों का गोचर है टॉरस के लिए भी, राहु केतु का, शनि और बृहस्पति का, ये पूरी इक्वेशन टॉरस की बदल सकती है और पूरी इक्वेशन चेंज हो सकती है, हालात चेंज हो सकते हैं पूरे. टॉरस के लिए सबसे पहले बात करेंगे शनि की. शनि की पोजीशन टॉरस के लिए दशम भाव में होगी और ये दशम भाव में रहेगी 29 अप्रैल 2022 से लेके 12 जुलाई 2022 से लेके 29 अप्रैल 2022 से लेके 12 जुलाई 2022. ये जो 10 हफ्ते हैं, सैटर्न आपका दशम भाव में आएगा. टॉरस दशम भाव में शनि आया, आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में आएगा. इसको हम अपने ज्योतिष की भाषा में कंटक शनि मानते हैं. कंटक सैटर्न कहते की परिभाषा दी जाती है. इसको हम जिस तरह ढैया होती है, शनि का चौथे भाव में आना ढैया मानते हैं, सिर्फ 2.5 साल की. अष्टम भाव में आना उसको भी ढैया मानते हैं. दशम भाव में आना भी शनि का ढैया में भी उसको स्वीकार किया जाता है. और दशम भाव में शनि का आना आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ दोनों को इम्पैक्ट करता है. पर्सनल लाइफ में आपकी इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है और कम्युनिकेशन के अंदर इतनी अच्छी नहीं होती. और प्रोफेशन आपका शनि दशम भाव में आएगा, प्रोफेशन को एक्सपैंड करता है, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस बढ़ा देता है, प्रोफेशन को बड़ा करना चाहता है अगेंस्ट योर विल और विद योर विल. लेकिन जो आपकी कम्युनिकेशन होगी उसमें फ्लक्चुएशन पैदा कर देगा. बोलचाल की भाषा किसी के साथ भी, यही नहीं कि वो पर्सनल लाइफ पे भी होगी, प्रोफेशनल लाइफ पे भी होगी. शनि दशम भाव में आके जो कम्युनिकेशन का जो आपका अंदाज होगा सबसे बदल देगा. और कई बार पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी. हाँ, खर्च आपका बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर खर्चे बहुत होंगे. कई बार आप स्पेकुलेशन में चले जाएंगे, कई बार आप इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे, कर्जा लेके कर देंगे. शनि दशम भाव में ऐसा कर सकता है. शनि दशम भाव में आएगा. ये जो टाइम पीरियड है, मैं इसका पूरा एस्पेक्ट, शनि दशम भाव का पूरा एस्पेक्ट आपके चौथे घर में जो फैमिली हैप्पीनेस का है, हार्मोनी का है, पीस ऑफ माइंड का है. सप्तम भाव जो आपके जॉइंट वेंचर का है, आपकी मैरिज रिलेशनशिप का है. शनि का पूरा एस्पेक्ट आपके 12th हाउस जो आपका हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है. लेकिन शनि टॉरस के दशम भाव में है, लेकिन है अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस में. ये जो पक्की बात मानता हूँ, उसकी शनि दशम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है. ये जो टाइम पीरियड है, आपके हर्डल्स तो आएंगे, आपके कामकाज में बैरियर्स भी आएंगे, लेकिन तरक्की आपको मिल जाएगी. कई बार आपके सोर्स ऑफ इनकम में बदलाव आ सकता है और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा. प्रोफेशन में तब्दीली आएगी, थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आएगी ज़रूर. इस टाइम के अंदर वो तब्दीली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन उसका एनालिसिस मैं करूँगा
राहु केतु की पोजीशन पे। शनि दशम भाव में है, बिजनेस को लेके थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होगी। इस टाइम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी स्पेकुलेशन सोच समझ के करें। पैसा उतना खर्च करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ये ना हो कि आप बहुत बड़ा लोन लेके बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट कर दें, और उसके अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, थोड़ी बहुत रिसर्च करके करें। ये ना हो कि आप पैसा उड़ा ही दें। इस समय बहुत सारे डिस्प्यूट्स में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे फजूल के झगड़ों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। कई बार वो झगड़े आपके प्रोफेशन से भी लिंक्ड होंगे, कई बार वो पर्सनल लाइफ से भी लिंक्ड होंगे। कई बार आपके शनि जब दशम भाव में आएगा, कई बार आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या आप उनका कम्युनिकेट नहीं उनके साथ कर रहे हैं, या आप उनको सुन ही नहीं रहे, या आपको उनको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। ये जो चीज़ सैटर्न कर सकता है, कम्युनिकेशन का गैप कर सकता है। कम्युनिकेशन बहुत कोल्ड कम्युनिकेशन कर सकता है। आप कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, आप बात ही नहीं करना चाहते, सैटर्न ये कर सकता है। उसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन आपकी सेटबैक्स पे आ गई तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन कट जाएगी, और उसमें ये होगा कि आप बिल्कुल ही बहुत कोल्ड एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेंगे, और वो इतना अच्छा नहीं होगा। शनि का दशम भाव में आना, पाया भी शनि का सोने का है, और इस टाइम के अंदर कामकाज में रुकावट बड़ी होगी, खर्चे भी होंगे, लेकिन बहुत एफर्ट डालेंगे फिर कुछ बात बनेगी। हर इंपॉर्टेंट काम को बनने में डिले होगी, टेक्निकल हिकअप्स होंगे। इस टाइम के अंदर शनि दशम भाव में आएगा, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, नया वेंचर आइडिया आपको मिलेगा, प्रोफेशनल पावरफुल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, फॉरेन जर्नी में आप जाएंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप अकम्प्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे, सोशली बड़े एक्टिव होंगे। सैटर्न दशम भाव में आया टॉरस वृष राशि के दोस्तों, ये टाइम पीरियड में आपकी एबिलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल सेट आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी। बहुत कुछ आप कंफर्ट को अचीव करेंगे, लग्जरी को अचीव करेंगे। मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अपनी मदर की वेलबींग का ध्यान रखें। प्रोफेशनली चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, बहुत जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड होगा, आप बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करेंगे। टॉरस, अगर आपका प्रोफेशन सैटर्न दशम भाव में आ रहा है, अगर आपका प्रोफेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या आईटी से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से है, अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुकात मेडिसिन से है, अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, स्टील मर्चेंट है, बिल्डिंग मर्चेंट है, ऑयल डीलर है, पेट्रोल गैस स्टेशन के मालिक हैं, होलसेल फूड सप्लायर है, और कोई होलसेल का काम है आपका, और आप कोई गाड़ियां बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर है, आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, एनीथिंग टू विद प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और टूल डिज़ाइनिंग और टूल मेकर्स, तो आपकी अचीवमेंट इस समय बहुत ज़्यादा होगी, ये पक्की बात है। और आपके काम में नाम भी होगा। सैटर्न दशम भाव में टॉरस के मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस में प्रॉपर्टी बनेगी, एसेट्स बनेंगे, डिग्निफाइड स्टेटस अचीव करेगी, प्रेस्टीज आपको मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के साथ करना पड़ेगा। शनि दशम भाव में है, इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा टॉरस आपको स्ट्रेस बहुत होगा, और कई बार वो बहुत सारे चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज, काम की वजह से भी स्ट्रेस होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट भी होंगे, स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो थोड़े बहुत लॉसेस के लिए भी तैयार रखें। ये ना हो कि आप अकेले पॉजिटिव सोचें, या कई बार कई पैसे आपके रिकवर ना हो पाएंगे। अगर आप टॉरस हैं और इस समय आप सैटर्न की पोजीशन दशम भाव में, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, या आप कोई फार्मिंग कर रहे हैं किसी भी तरह की, कोई एनिमल फार्मिंग है, या आप वैसे ही फार्मर हैं, तो इस समय फिर भी अपने आप को थोड़े बहुत लॉस के लिए तैयार रखें। प्रोफेशन के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, विचार करके करें। और इस समय अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, जॉब कर रहे हैं, तो आपको नई जॉब मिल जाएगी।
लेकिन कई बार नई जॉब में टिके रहना मुश्किल होगा, ये भी बात है। लोगों के साथ नई जगह पे अगर आप गए भी हैं, पॉलिटिकल इक्वेशन को भी सेटल करना पड़ेगा, इजी नहीं होगा। लोग आपको नई जगह पे जॉब तो दे देंगे, लेकिन बहुत सारी गेम्स आपके साथ खेली जाएंगी। पहले कुछ बताया था, अब कुछ कहा जा रहा है, और कई बार आपके सीनियर्स, डिसीजन मेकर आपको लेट डाउन कर देंगे। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा। लोन वोन सोच समझ के ले, और हेल्थ का ध्यान रखें, और घर में दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी। किसी से दुश्मनी पैदा ना करें, ग्रज ना रखें किसी के अगेंस्ट। ट्रैवलिंग आपकी बहुत हो सकती है, और इस टाइम के अंदर ऐसी कोई हरकत ना करें जो वाहियात किस्म की हो। रिस्पेक्ट, ऑर्डर बरकरार रखें, तमीज़ से पेश आए। शनि आपके दशम भाव में, शनि दशम भाव में है। इस टाइम के अंदर बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारी प्रिपरेशन से गुजरना पड़ेगा, ये भी है। शनि दशम भाव में इस टाइम के अंदर रिजल्ट अच्छे हैं, और इस शनि दशम भाव में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में शनि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देगा, आपको स्टेटस भी देगा। अगर आप एम्बिशियस हैं, वो आपके वजूद को कायम करेगा। टॉरस के लिए मैं ये ओपनली कहूँगा शनि दशम भाव में। और अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, इजी चाहते हैं, वो बात अलग है। अगर आपके अंदर कोई एम्बिशन है, मैंने मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, शनि दशम भाव में वो दे सकता है, लेकिन आप उस चैलेंज के लिए तैयार हो। लेकिन ये नहीं कह सकते आप मुझे ये चाहिए पर मैं ये नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए पर मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे स्टेटस दे दे पर मैं टाइम नहीं लगा सकता। नो नो नो, यू कांट डू दैट। अगर आपको स्टेटस लेना है तो आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो अच्छा जी 5 बज गए मैं घर जा रहा हूँ। कौन से घर? आपको घर दिया गया है साहब, दिस जॉब इज़ 24/7। घर आपका यही है, यहीं आपको सोना, खाना, पीना, जागना है। यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू आर रनिंग द कंट्री। घर गुर नहीं आप जा सकते। घर तो आप जब जाएंगे जब आप इलेक्शन पे टाइम हारे जीते, उसके बाद। हाँ, और अगर आपको लगता है कि इट इज़ टू मच, एवरी टाइम पीपल आर वांटेड माय अटेंशन, हर चीज़ में मुझे मेरी अटेंशन चाहिए, हर डिसीजन में मेरी चाहिए, तो इज़ टू मच, ये आपका हाल हो सकता है शनि दशम भाव में आके। कई बार हम एक साइड देखते हैं कि स्टेटस, प्रेस्टीज, पावर, अथॉरिटी, मनी, लेकिन बाकी चीज़ों पे बिल्कुल हम इग्नोर हो जाते हैं। भाई इन चीज़ों को अचीव करने के लिए या इन चीज़ों को अक्वायर करने के लिए आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, हम ये तो सोचते हैं कि मेरे रिवार्ड्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। शनि दशम भाव में यू नेल यू डाउन, I'll give you status, prestige, honor, authority, but I want this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 up to 20, ये आपकी ड्यूटीज हैं। ये क्या हो गया? हाँ, ये है। हाँ, अगर आप एम्बिशियस हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको पहले ही पता है कि भाई किसी ने कुछ मुझे देना है, उसने ये तो करवाना ही है। और इस टाइम के अंदर सैटर्न ने आपको डेवलप करना है हर एरिया में। 10th हाउस में सैटर्न आपके घर को एक्सपैंड करेगा, आपकी इंडिविजुअलिटी को नए लेवल पे लेके जाएगा। हाँ, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो दुनिया के सामने उसने जाहिर कर देना है। अगर मैं कहूँ जी मैं कलाकार हूँ, तो मेरी कला का पता कैसे चलेगा? हाँ, गाने वाले का मुंह खुलवाए, विद इन फर्स्ट 6 सेकंड मुझे पता लग जाता है इसको गाना भी आता है कि नहीं। फर्स्ट 10 सेकंड, फर्स्ट 30 सेकंड, यू नो एग्जैक्टली हाँ इसकी पॉसिबिलिटी। इसी तरह एक्टर की भी यही हालत होती है, परफॉर्मर कोई भी हो पता होगा। हाँ, सैटर्न दशम भाव में होगा, आप छुप ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई क्राफ्ट है, नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल सेट है, यू विल बी थॉरली एक्नॉलेज्ड, यू विल बी थॉरली रिकॉग्नाइज्ड। सैटर्न शनि ने दुनिया के सामने आपको जाहिर कर देना है, दुनिया के सामने आपको ले जाना है कि यू आर समबॉडी स्पेशल। और वो दुनिया पे जब जाहिर होगी, अपॉर्चुनिटी की बरसात हो सकती है, आपकी इंडिविजुअलिटी में राइज आ जाएगी, आप अपने वजूद को कायम कर लेंगे, थिक को थिन, चाहे दुनिया सारी अगेंस्ट हो उसके, चाहे दुनिया आपके साथ हो, ये भी पक्की बात है। लेकिन शनि दशम भाव में है, ये जो टाइम पीरियड है, इस कैन भी इसकी जो
इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, अकेले पॉजिटिव नहीं है। कई बार हम नेगेटिव सुनने के लिए आदी नहीं होते। बहुत बार लोगों के पास सिलेक्टिव हियरिंग होती है, उनको जो सुनना होता है वो सुन लेते हैं, जो सुनना नहीं होता उसको वो एक फिल्टर लगा होता है, कान में होता है, नज़र नहीं आता, वो नहीं सुनते। सैटर्न दशम भाव में इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप अपने जो भी करना है वो राइट वे के साथ करें, एथिकल वे के साथ करें। कंडक्ट आपका एथिकल होना चाहिए। अगर आप सैटर्न दशम भाव में हैं, अगर आप अनएथिकल हो गए या चीटिंग शुरू कर दी या फ्रॉड शुरू कर दिया, या आप सोगे आप तो किसी को मैंने मिला ही गया, मुझे क्या परवाह है, अब वो नहीं, वो आपको बख्शेगा नहीं। ये सैटर्न की पुरानी आदत है, वो आपको थॉरली खुद ही पनिश करेगा, बिकॉज ही इज ए चीफ जस्टिस। वही आपको पकड़ के आपको फटका देगा, ये आपने कमिटमेंट किया, ये आप रॉन्ग हो यहाँ पे, आई एम गोइंग टू पनिश यू विदाउट कंडीशन, विल डू दैट। शनि कैन डू दैट। शनि आपको, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप डिवोटेड हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप ड्रिवन हैं, अगर आप बहुत सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, सैटर्न कैन गिव यू डिग्निफाइड रिवार्ड्स। यस, अगर आप इफ यू सिंसियर नहीं है, डिसऑनेस्ट है, फ्रॉडस्टर है, उतनी बुरी तरह से आपको पटका, आपकी फैंटी ला देगा, पूरी तरह से आपकी खाल उधार देगा पूरी तरह से, और आपका स्टेटस छीन लेगा। इस नॉर्मल बात, स्टेटस बचेगा ही नहीं आपका। इस समय आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक होता है जैसे 4th हाउस है, वो हमारा पर्सनल है, 4th हाउस के एग्जैक्टली अपोजिट 10th हाउस है। 4th हाउस हमारी पर्सनल डायमेंशन है, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, जो हम बहुत गुप्त रखते हैं, किसी को पता नहीं, वो प्राइवेट होती है। मैटर्स, ऑल द मैटर्स आर प्राइवेट। घर में क्या हो रहा है, घर में बात क्या हो रही है। जो 10th हाउस है पर्सनल नहीं, ये टोटली नॉन पर्सनल है, ये टोटली एक्सटर्नल है। 10th हाउस की लाइफ हम जी रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। 10th हाउस दुनिया में जार होता है। 10th हाउस के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, ये मेरा है स्टेटस, दिस इज माई जॉब, दिस इज माई करियर, इससे आप दुनिया में मुझे जानेंगे। व्हाट आई डू, व्हाट आई परफॉर्म, चाहे मैं हलवाई हूँ या ज्योतिषी हूँ या इंजीनियर हूँ या बैरिस्टर हूँ या बैंकर हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ या प्राइम मिनिस्टर हूँ या कोई मिनिस्टर हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा पंथ चला रहा हूँ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, whoever, मैं चाहे टैक्सी ड्राइवर हूँ, रेस्टोरेंट में वेटर हूँ, रेस्टोरेंट की किचन में काम करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं बर्तन साफ करने वाला हूँ, सर्व करने वाला हूँ, मैं डोरमैन हूँ, व्हाटएवर, मैं ड्राइवर हूँ, डजंट मैटर। सैटर्न वो आपका जो दुनिया के सामने जार है, जिसकी वजह से दुनिया आपको जानती है, 10th हाउस वो है, 10th हाउस है ही वो। 4th हाउस है जो अब छुपा, जो हम दुनिया से हम, वो पर्सनल लाइफ है, हमारे रिश्ते परिवार में कैसे हैं और हमारे घर का माहौल क्या है, वो हम प्राइवेट रखते हैं। 10th हाउस प्राइवेट होता नहीं, 10th हाउस एग्जैक्टली अपोजिट है, अपोजिट टू द 4th टू द 10th हाउस। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सैटर्न आपकी दशम भाव में आके इसका इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ पे भी चला जाता है, आपकी 1-to-1 जो इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं उन पर भी हो रहा होता है, आपके जो पैसा खर्च किया स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट उस पर भी हो रहा है और उसको उसने कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हर जगह पे ठीक रहना पड़ेगा, और अगर आप इसको प्रॉपरली ठीक कर रहे हैं तो यही सैटर्न आपको अल्टीमेट सक्सेस दे सकता है। यहाँ पे यही सैटर्न आपको अल्टीमेटली पनिश भी कर सकता है। डिपेंड करता है आप करतूत क्या कर रहे हो। जब शनि आ गया है, ये उस तरह से है कि आपका बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड कैसा है, कंडक्ट कैसा है, डीलिंग कैसी, रूटीन में डिसिप्लिन क्या है। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं फिर ठीक है। अगर आप कोई सफाई नहीं, हाथ की सफाई नहीं कर रहे, कोई चीटिंग फ्रॉड डिसेप्शन नहीं कर रहे, फिर ठीक है। शनि दशम भाव में आपको इन चीज़ों से बचना होगा। अगर आप इसके पूरे रिजल्ट चाहते हैं कि अच्छे हों, भी मेरे साथ शनि पावर फोर्स की तरह चले, अगर हाँ शनि आपके साथ पावर फोर्स की तरह चले, बहुत ही सुप्रीम फोर्स की तरह चले, तो फिर आपके रिवॉर्ड बहुत बड़े हैं। शनि दशम भाव में जाके आपकी तरक्की 10 गुना कर सकता है,
अगर वो चाहे तो। हाँ, लेकिन शनि दशम भाव में आपको वहां ले जाके पिटाई करेगा जहां पे आपका कुछ मिलेगा ही नहीं। ये उस तरह से भी कर सकता है। दो दो तस्वीरें हैं, एक बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत नेगेटिव है। दशम भाव में 10 गुना आपको तरक्की कर देगा कि यू आर यू, पूरी दुनिया में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, होल वर्ल्ड नीड यू, यस। लेकिन शनि दशम भाव में आपको फारिग कर देगा, गेट आउट फॉर एवर, सब कुछ छीन लेगा, प्रोफेशन तो बचेगा ही नहीं। हाँ, आप लोगों को कहानी सुनाएंगे कि मैं कभी ज़माने में ये काम किया करता था, अब तो नहीं कर रहा हूँ, ये आप सुनाएं। शनि दशम भाव में आपसे ये भी करवा सकते हैं। लेकिन इस समय शनि जब दशम भाव में हो, ईगो ना लेके आए, हर बात पे बिटरनेस ना लेके आए, सैडनेस ना लेके आए, हर बात पे ग्रम्पी ना हो, फिजूल बातों पे घर में झगड़ा ना करें, घर के माहौल को इतना वाहियात ना करें, लड़ने झगड़ने और कॉन्फ्लिक्ट को अपने आप से दूर रखें और अपनी कंडक्ट कोड कंडक्ट को बहुत अच्छा रखें। फिर शनि दशम भाव में रिजल्ट अच्छे देता है। और एक जो बहुत अच्छा उपाय है जो आपको जो जिसपे पैसे भी लग रहे, बुजुर्गों की सेवा करें। जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे ब्लेसिंग्स लें। माँ बाप अंकल, कोई भी आपके आंटी, कोई भी है जो बुजुर्ग है, उनसे रिस्पेक्ट देम, लुक आफ्टर देम, व्हेनेवर दे नीड यू, लुक आफ्टर देम, सर्व देम। वो आप बहुत अच्छा एक ये उपाय है। इसके कोई पैसे वैसे नहीं लगने, इसको आप करें। इससे बिना पैसे आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको चाहिए। अगर आपकी माताजी पिताजी आपको आशीर्वाद हर रोज़ दे, एवरी डे यू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, ये जितने भी आपके अंकल आंटीज हैं सभी आपको करें, लेकिन फिर रिजल्ट चाहिए। एक इस पर खास एक रिश्ता होता है जिसमें जो रिश्ता आपके ताया या चाचा का होता है, उनकी बहुत इज्जत करें, उनको नाराज ना करें। शनि दशम भाव में है, अगर आपके चचा के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उस पर रिलेशनशिप में और उसको गंदा ना करें। अगर शनि दशम भाव में आया, आपकी चचा के साथ नाराजगी चल रही है या ताया के साथ बातचीत नहीं है, तो आपको चाहिए अब जाके वहाँ जाएं और अब जो हमारे कल्चर और रिलीजन के मुताबिक जो होता है, गिव देम द बेस्ट रिगार्ड एंड अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर एंड मेक इट अप। सबसे आसान, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी, जस्ट यू हैव टू लोअर योर ईगो। तो आप पूरे शनि की तस्वीर को बदल सकते हैं, ये पक्की बात है। और चॉइस आपकी है, आप अपनी अकड़ को कायम रखना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, या आप कुछ करेंगे भी, तो ये आपके ऊपर है। हाँ, टॉरस के लिए शनि फिर 9th हाउस में जाएगा 12 जुलाई के बाद। 9th हाउस टॉरस जाएगा, वो उसने वहाँ रहना है नेक्स्ट ईयर 17 जनवरी 2023 तक, और 17 जनवरी 2023 के बाद फिर वापस शनि ने 9th हाउस से 10th हाउस में फिर आएगा और वो रहेगा 2 year and 3.5 month रहेगा। पाया शनि का जब 9th हाउस में जाएगा लोहे का है, और इस टाइम के अंदर डोमेस्टिक आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से दूर रहे। कई बार बनते बनते कामों में देरी होगी, कई बार टाइम बड़ा वेस्ट होगा, एनर्जी बड़ी वेस्ट होगी, पैसे बड़े वेस्ट होंगे, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। और इस टाइम के अंदर आपको, अगर आप 9th हाउस में शनि है, अगर आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क का टेस्ट है 9th हाउस में शनि का होना। शनि का 9th हाउस का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बृहस्पति कैसा है, जुपिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। लेकिन शनि 9th हाउस में आके स्टेटस रूट देता है, पैसा रूट देता है, और अगर बृहस्पति भी ठीक है तो प्रॉपर्टी भी दे सकता है, ट्रैवलिंग बड़ी देगा, कंफर्ट बहुत देगा। शनि 9th हाउस का जब बृहस्पति भी ठीक हो, राहु केतु की पोजीशन भी ठीक हो, और अगर आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में हैं, आप प्रोफेशनल प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इस टाइम के अंदर प्रॉस्पेरिटी बहुत होती है। इस टाइम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज डिजल्व हो जाए। आप बहुत सारे प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शनि 9th हाउस में हो, तो अगर आप टूरिज्म के बिजनेस पे हैं, आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, आप लॉजिस्टिक का काम करते हैं, आप ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। चलते हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो हेलो, हाय, नमस्कार। हाँ हाय प्रकाश जी, सलाम।
हाउ कैन आई हेल्प यू? जी मेरा नाम खालिद। डेट ऑफ बर्थ? 22 जून 1960। टाइम ऑफ बर्थ? 6:30 PM शाम को। प्लेस ऑफ बर्थ? रावलपिंडी। ओके जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे पहले तो ये पता करना था कि मैं अपने भाई की फैमिली को ना स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो उनके क्या कोई हालात नजर आ रहे हैं? आपको अपने भाई की डिटेल देनी चाहिए, ना कि अपनी। अच्छा। हाँ जी। कि उसका टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ मैं बाहर निकाले तो और ये भी पूछना था कि उनका नाम क्या है जी? इस वक्त उनका नाम अरशद है। आपने अपने भाई के बारे में पूछ रहे हैं, अपने बारे में बात करनी है? दोनों के। ओके, अरशद। जी अरशद। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 68। टाइम ऑफ बर्थ? ये मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल में दोपहर था। आई डोंट नो कि कितना था टाइम। प्लेस ऑफ बर्थ? और रावलपिंडी है जी। हाँ जी, बात करें। जी तो ये इसी के बारे में पता करना था। इसकी फैमिली को मैंने स्पॉन्सर किया था, तो वो क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक दफा वो रिजेक्शन हुई थी, तो फिर दोबारा अपील में गए हैं, तो अब क्या सिचुएशन है? ये बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन काफी मुश्किल से। अच्छा। तो कितना कुछ टाइम नजर आ रहा है कुछ? अब ये है कि ये जो टाइम पीरियड है इनका, इनको बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल से, इजी नहीं होगा। अच्छा। ये अकेले की बात होगी या पूरी फैमिली आ सकती है? नहीं, इसको अकेले को बुलाएं, पूरी फैमिली को ना बुलाएं, अकेले को बुला लें। अकेले इनका आना बहुत आसान होगा, पूरी फैमिली को अगर बुलाएंगे शायद मुश्किल हो जाएगा। जी अच्छा। तो इसके आजकल कोई फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो कैसी जा रही है, मतलब बिजनेस के हवाले से या कुछ? अभी तो सिचुएशन डिफिकल्ट है, टफ है। अच्छा। लेकिन आगे जाके थोड़ी ठीक हो जाएगी। जी ये जहाँ भी हाथ डालता है कुछ काम करता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा अर्सा चला के तो वो खत्म कर देता है। फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी देखे तो क्या करता है, आई डोंट नो। लेकिन उनको काफी अगर वो बाहर आना चाहते हैं तो अकेले आए, फैमिली को नहीं। अच्छा। लेकिन ये एक दो चीजें हैं जी। इस टाइम के दौरान, जो पिछले 2-3 साल में इन्होंने क्या किया, इनको अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। टाइम इनका बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये प्रॉपर्टी का एक्चुअली करता है काम ना, कंस्ट्रक्शन का। वो ठीक है इनके लिए। वो ठीक है ना? हाँ, प्रॉपर्टी डेवलपर, प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी के कमीशन एजेंट बनना, वो इनके लिए ठीक है। जी। हाँ जी, ये ऐसे क्योंकि पहले वो शॉप्स भी चला चुका है अपनी वो, लेकिन उसमें कोई इतना कुछ नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट भी किया उसमें भी इतना कुछ नहीं हुआ। तो इसमें जो है वो मतलब उसका हाथ अच्छा चलता है। नहीं, प्रॉपर्टी इनका बिजनेस है।
प्रॉपर्टी में वो कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं, काफी अच्छा। अच्छा, तो नेक्स्ट फ्यूचर में कुछ अच्छा नजर आ रहा है इसके लिए, कुछ भाई के लिए? अप्रैल में इक्वेशन बदल जानी इनकी। अच्छा, वो कैसे हालात नजर आ रहे हैं अप्रैल में? ठीक है, अच्छा, अप्रैल में मतलब इनकी कामयाबी इक्वेशन है। चेंज होनी है। अच्छा, कोई तंगी वाले हालात नहीं होंगे? अप्रैल में इनको एक मौका मिल जाना है अच्छा। अच्छा, वही का या किसी फॉरेन कंट्री आने का या कुछ? नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये खुद के को काम कर सकते हैं, जी, कोई प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है। अच्छा जी, हाँ ये तो अच्छा है, अच्छा है। इनको मैं ये कहूंगा कि इनको चाहिए ट्यूसडे वाले दिन किसी मस्जिद में लड्डू बंटवा दें न्याज में। अच्छा, लड्डू बंटवाते रहे, बूंदी बूंदी वाले लड्डू। अच्छा, या बूंदी वाले लड्डू। अच्छा, हर ट्यूसडे को? हर ट्यूसडे को। ओके, मतलब टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, दोपहर है, शाम है, सुबह है, क्या है, कोई बात? हाँ, आपने ये सोचना है कि यार मैं 40 लोगों को लड्डू जरूर खिलाऊंगा, या बूंदी खिला दूंगा, या लड्डू खिला दूंगा, खिलाऊंगा जरूर। अच्छा, 40 लोगों को। ठीक है। और इनको हर कहें Tuesday को। अपने जो भी पैसे कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा नाबीनों, जहाँ को नाबीनों का स्कूल हो, जहाँ पे नबीने बच्चे हों, पढ़ते हों, या जहाँ पे वो रहते हों नाबीने, भिखारी नहीं कह रहा हूँ, जो नाबीने को, नबीनों का स्कूल हो, को ब्लाइंड स्कूल हो, वहाँ पैसे वगैरह डोनेट करते रहे, वहाँ लंगर में सामान डालते रहे, जी, जो कमाई हो उसका ठीक है। कुछ हिस्सा उसमें डालते रहे, लंगर में सामान दे दे, ठीक। खाने पीने की चीजें दे दे, मेडिसिन लेके दे दे, नाबीने जो लोग हैं उनको, ठीक। तो या नबीनों के ठीक। स्कूल में, उसमें इनका फिर ब्रेक नहीं आएगी काम में। ठीक, अभी इनका काम में नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है। और इनको मैं ये कहूंगा कि आप ना इनको ओपनली ये कहना कि इस समय कर्जे ना ले। ठीक, अगर इन्होंने इस समय कर्जे ले लिए ना तो वो उतरेंगे नहीं। ठीक है। और एक बात इनको मैं और कहना चाहूंगा, जो है बट सुनने में बड़ी अच्छी नहीं लगेगी, ओ अच्छा। जुआ नहीं खेलना। जी, वो तो कभी भी नहीं करता। हाँ, बस वो शर्तों पे पैसे नहीं लगाने, बैटिंग नहीं करनी, जी, वो नहीं, जुआ नहीं वो नहीं खेलना। करता। हाँ, जी, वो नहीं करता। अगर वो शुरू हो गया इनका, या किसी ने इनको लगा लिया, या शर्त करते हैं, या मैचों पे पैसे लगाते हैं, वो किसी ने पीछे भी लगा लिया, डबल हो जाएंगे, वो ना करे। वो तो आपके कपड़े भी उतर जाएंगे उसमें। जी, हाँ, उसने आजकल वो क्रिप्टो करेंसी में कुछ इन्वेस्ट किए हुए थे, वो तो मेरे ख्याल में और हो जाता है कुछ कि नहीं? नहीं, वो चीज़ और है, लेकिन कई बार लोग अच्छा। अपनी बैटिंग में पैसे लगाने शुरू कर देते हैं, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, वो ना करें, बाकी ठीक है। लेकिन ये टाइम पीरियड है, इसमें ये मैं ओपनली कहूँगा कि अप्रैल के बाद इक्वेशन चेंज होनी, उसके लिए तैयार है। ठीक, ठीक, ठीक है। तो मेरा कुछ बता सकते हैं फिर प्लीज? जो मैंने पहले नाम और डेट ऑफ बर्थ दी है। क्वेश्चन दीजिए। हेलो, क्वेश्चन दीजिए। जी जी, सॉरी आवाज नहीं आई। आप क्वेश्चन दीजिए। अच्छा अच्छा, आपके पास है वो डेटा वगैरह? अच्छा, हाँ जी, मैं अपने बारे में कह रहा था कि मेरे बिजनेस में कोई क्या इफेक्ट है, या कोई अब पिछले बहुत लॉस हो चुके हैं मुझे। आपका नाम खालिद है ना? जी, खालिद। कोरोना की वजह से काफी लॉस हुआ है, और उससे पहले हालात बहुत अच्छे थे।
आपके हालात चेंज हो जाने हैं। चेंज हो जाने हैं। काफी डेप्थ हो गए हैं बैंकों में, ये वो। आपके हालात चेंज तो होंगे लेकिन हो जाएंगे। या तो चेंज होंगे आपके अप्रैल के बाद, अप्रैल मई के बाद, या आपके हालात चेंज हो जाने हैं अगस्त जैसे शुरू होएगा। अच्छा, तो उससे पहले के क्या कुछ सिचुएशन लग रही है? चेंज आ जानी है आपकी, वैसे हालात नहीं है जैसे पहले थे। हालात ऐसे हो जाने, पहले वाले हालात नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये कौन सा टाइम पीरियड होगा? अभी जो टाइम चल रहा है ये आपका एक आखिरी फेज चल रहा है मुश्किल का, जो इस समय चल रहा है आपका ऑलरेडी उस पीरियड में आप हो। उस फेज ने कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना है 2 अगस्त को। 2 अगस्त के बाद आपका टाइम शुरू होना है जो काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक। अगर आपके दिमाग में ये हुआ कि आपने मूव होना है तो उसमें सवाल करके मूव करें, अपनी तौर से नहीं। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये धुन पैदा होगी मुझे मूव होना है, मूव होना है, अगर आपके मूव होने की भूत आपके अंदर आ गया कि मुझे मूव होना ही होना है जी, मैं मूव होना ही चाहता हूँ, तो उस समय आप क्वेश्चन जरूर करें। अच्छा, मूव से मुराद ये कि विद इन कंट्री या कहीं और, या विद इन कंट्री भी मूव हो सकते हैं, बाहर भी मूव हो सकते हैं, और ये भी सोच सकते हैं कि मुझे कहीं और ही चले जाना चाहिए, यहाँ बात नहीं बन रही, कुछ नया करते हैं, लेकिन उस समय सवाल करके जाए, वैसे नहीं। अच्छा, तो अभी तो मैं तो काफी टाइम से यही हूँ। हाँ, लेकिन अगस्त ऑनवर्ड्स अभी नहीं। अच्छा, हाँ, पर लेकिन अगस्त ऑनवर्ड ऐसे हालात भी जो आपके अब है ये नहीं रहेंगे। ठीक, बेहतरी होगी। बेहतरी होगी। तो अभी तक जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें क्या कुछ चांसेस नजर आते हैं अच्छे? कुछ जो भी मैं अभी तो ऐसे जैसे जकड़े हुए हैं आप, ना लेफ्ट ना राइट, जी, फंसे हुए हैं बस। जी, हाँ, जी। जो आप फंसे हुए हैं ना ये उसमें से आप निकल आना। अच्छा, तो ये डिफिकल्टीज जो से अप्रैल मई तक कुछ ठीक होगी या? दोबारा बोलिए। ये डिफिकल्टीज जो इस वक्त है ये अप्रैल मई तक कुछ बेहतर हो जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी। 2 अगस्त मिड अप्रैल के बाद कुछ बेहतरी नजर आएगी, अच्छा, और अगस्त के बाद और बेहतरी नजर आएगी। ठीक, ठीक है। तो अभी अगर मैं कंट्री कोई ट्रैवल करना चाहूँ तो उसमें कुछ? दोबारा बोलिए। अगर मैं इस वक्त या फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई 4, 5, 6 हफ्ते बाद कोई ट्रैवल करना चाहूँ फॉरेन कंट्री, तो बेहतर होगा कुछ के नहीं? वो जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो पर्सनल प्लेयर के लिए ट्रैवल है या बिजनेस के लिए ट्रैवल है? जी, प्लेयर के लिए ऐसे। हाँ जी, जी, प्लेयर के लिए, रिश्तेदारों को मिलना, भाइयों को मिलना। जाएं आप अगर जाना चाहते हैं 13 अप्रैल के बाद। अच्छा, 13 अप्रैल के बाद। हाँ। अच्छा, टाइम ठीक। तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएंगे जो इस वक्त मेरे चल रहे हैं, मुश्किल है, कुछ आगे कुछ अच्छा होगा या? किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? जी, स्पाउस रिलेशनशिप। अभी तो फड्डे पड़े हुए हैं। जी, हाँ, बहुत गलतफहमियां पैदा की हुई हैं आपस में। जी, उसको निपटाएं। अच्छा जी, हाँ, उन गलतफहमियों को खत्म करें। जी, ठीक। तो और कुछ बेहतरी आगे कुछ है और कुछ मतलब कुछ नजर आ रहा है? अच्छा,
नहीं, नजर तो बहुत कुछ आ रहा है। किस पर्पस की बात कर रहे हैं ना आप? कोई एड्रेस तो बताएं, मैं आपको बता देता हूँ कि है या नहीं है। किस हिसाब से बोलिए। जी, जो अभी अभी जो रिलेशनशिप चल रहे हैं, स्पाउस जैसे होती है ना। हाँ, उसमें जो एक आपकी और आपकी जो स्पाउस के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको खत्म कर दें। जी, हाँ, कि रिश्ता खत्म कर दें। मैं रिश्ता खत्म करने के लिए बोलूंगा जी। आप वो कल्चर के अगेंस्ट है, उसे कैसे कहेंगे? हाँ, जी, रिश्ता जी, तब खत्म करें जब उसके लिए आपने सारा काम पहले कर लिया हो, समझा लिया, बुझा जी, लिया, आपने पूरी बात की। अगर उनकी कोई डिसअपॉइंटमेंट जी, है, फ्रस्ट्रेशन है, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, पिछले 1.5 साल में जी, सिवाय जी, लड़ाइयों के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ बहस ही होती जा रही है, उस पर बात करें कि क्यों जी, हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आप एक सोल्यूशन तो लेके जी, आए। हाँ, जी, पर मैं क्योंकि एक दूसरी बात पे ये भी कहूँगा, उसको भी आपको ध्यान से जी, सुनना पड़ेगा। अकेली जी, औरत बदलने से खुशी नहीं मिलेगी आपको। ठीक, अगर आप कहें मैं एक लेडी को और ले आता हूँ, इनको इनसे फारिग हो जाता हूँ, ठीक है, लेकिन रोना पीटना जी, आपका खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। अच्छा, हाँ, अकेली औरतें बदलने से खुशी नहीं मिलेगी। अकेली जी, औरतें बदलने से खुशी नहीं मिलेगी, रोना पीटना वैसे ही रहेगा। और एक और को भी ले आए, वो रोना पीटना पहले से ज्यादा होगा, तो आप बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो जाएंगे, या कहाँ फंस गए। हाँ, 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 मुझे पता चला था कि जो नए मतलब रिलेशनशिप मेरा होगा वो कंपैटिबिलिटी पे अच्छा है, वर्गो या लियो नजर नहीं आता है। ना, वो वर्गो लियो उसको तो भूल ही जाएं आप। कंपैटिबिलिटी बस चार्ट से होती है, अकेला वर्गो लियो कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, नो, अकेला वर्गो लियो ले आए तो कंपैटिबिलिटी से ऐसे नहीं होती। ठीक, एक होती है बच्चों वाली बातें, एक होती है प्रोफेशनल बातें। आई डोंट टॉक लाइक ए चाइल्ड, ठीक। जी, 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 प्रोफेशनल वाली बातें वो प्रोफेशनली जो हम जो एडवाइस देते हैं, हर रिश्ते ने 7 ईयर्स के अंदर डेवलप हो जाना है, मेंटली भी फिजिकली भी, और हर तरह से डेवलप जी, होना है उसने, उसको आप रोक ही नहीं जी, सकते। आप जब कंपैटिबिलिटी जी, करेंगे, आप देखें कि 7 साल के बाद इस रिलेशनशिप रिश्ते का बनेगा क्या, और आप कहाँ पे जी, खड़े होंगे, ठीक। ठीक, और आपको ये सोचना होगा कि अगर उसमें कंफर्ट है तो ठीक है, फिर जिंदगी जी रहे हैं। जी, अगर आप कंफर्ट जी, नहीं है और आप वहाँ फड्डे डाल के बैठे हुए हैं, फिजाए फजूल बातें लेके बैठे हुए हैं, फिर तो फायदा कोई नहीं। जी, हाँ, और आप कितनी है शादियाँ और करेंगे, तो बताइए। इंसान थक भी जाता है कर करके शादियाँ, यार बहुत हो गया। जी, हाँ, जी, हाँ, हर किसी के साथ जीरो से स्टार्ट करेंगे, और कब तक करेंगे ना, ये भी देखिए। जी, ठीक है, हाँ, जी। लेकिन तो ये है और कि मेरे जो मन इस समय एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, इसमें बहुत सारा क्लटर है, उसको खत्म कर दे, क्लटर को खत्म कर दे, फिर देखिए वो उसमें क्या बनता है उसका। आप अपनी ओर से अच्छा, कोशिश करके जाएं प्लीज। ठीक, ओके, आपको अगर कोई वो नई नई कर जिंदगी शुरू करनी है, वो किसी की बददुआ से जी, थोड़ी शुरू करनी है, एटलीस्ट किसी की जी, जी, गुड विशेस तो हो आपके साथ। जी, तो मेरे लिए कुछ बताएंगे कि मैं क्या करूं, कुछ मतलब अम, कुछ सदके खैरात कुछ ऐसी दूं, कब दूं, कुछ है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है जी आपके लिए, एक तो आप जब भी मौका मिले मस्जिद में लोगों को खीर खिलाएं, ठीक, और एक जो आप जितने अगर आपके जो लोग जो आपके इमाम साहब हैं, मौलवी साहब हैं, जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, या जो लोग इनके पास प्रीस्टहुड है, जो मौलवी साहब हैं, उनको जी, आप जब भी मौका मिले उनको केले, जुराबें, कंबल, पैसे दे दिया करें। ठीक, हाँ, ये किसी दिन भी हो सकता है, इसका कोई दिन मखसूस के साथ नहीं है कोई। ताल्लुकात नहीं है, ये आपकी मर्जी से भी होगा, ये आपके ऊपर होगा। आप जब भी ऐसे लोगों को मिले जो प्रोफेशनल जो मौलवी हैं, जो यही इनकी किरत है, यही काम करते हैं, और जी, उनको आप दें। अच्छा, ठीक, हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, तो एहतियात जरूरी है। हाँ, जी, अच्छा, ठीक है।
तो और कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी कुछ नजर आ रही है मेरे, कुछ फ्यूचर में कुछ आगे जा के? एक तो फाइनेंशियल लॉस से बचना है और एक बहुत बड़ी लड़ाई से बचना है। अच्छा, ठीक। ओके जी काले साहब, मेरे शो का टाइम खत्म हो गया, फिर मिलेंगे संडे वाला दिन, हमारा फिर लाइव शो है, लाइव स्ट्रीम भी है। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टुडे आई हैव टू एंड द शो, टाइम इज अप and I'll be back on Sunday. There are 2 live streaming we're going to organize. First live stream start from exactly at 12 o'clock on Sunday till 2 o'clock in the afternoon. Then we have a 1-hour break. Then the second live streaming start at 3 p.m. till 5 p.m. 3 p.m. till 5 p.m. we have a live streaming. We have a food XP show. So I'll be back again Sunday at 12 o'clock. Wish you all the best and take care. Thank you.